and very good morning to all my dear students. Today I welcome you once again in the science class. This is your EVS book around us. In the second sem, we have done the one lesson, that is the science of kitchen. Today we'll be doing lesson number 9, that is your land. All of you will first write today's date 14/12/2020 and classwork and day Monday, and then we will start the work. Dear children, please have the habit of writing the date whenever you start the work in your textbook, notebook or workbook. Now lesson number 9 is your land. Now in this lesson we are going to study about the different types of soils that we have that are available here. So how do we get the soil, and how many different types of soils are there on the basis of the components that are there in the soil and on the basis of the color that is there. Now first we'll read it. Magan Bhai, after taking his dinner, sat for watching TV. The baby Zil came running to him. She said, "Grandfather, tell me a story." "Which story do you want to listen?" Grandfather asked. "Then one which I enjoy the most," Zil said. "Okay," said the grandfather and began the story. So here's a story about a villager named Magan Bhai. He was watching TV after he had finished his dinner, and the young granddaughter came running to him and said that, "Tell me a story which I enjoy the most." So grandfather said, "Okay, I'll say the story." Now here's a story that the grandfather is telling to his granddaughter Zil. There was a small village. A potter named Magan Bhai stayed there. Now, the story is about a small potter who was living in that small village. And what was the name of the potter? The name of the potter was Magan Bhai. Every day, he brings soil from the lake and prepares pots, bowls, etc. So, what is the work of the potter? The potter makes pots and different types of articles from the soil or from the mud, and then he bakes it and sells it, like pots which are very common that we use in our houses also. One day he prepared a small pot. He painted it colorful. The pot looked very beautiful now. He kept the pot in his shop for sale. The next day, Ramesh Bhai was passing by his shop. He saw the pot and immediately purchased it. His daughter Bindya became extremely happy after seeing this small pot in Ramesh Bhai's hand. She said, "Papa, I will fill water in this small pot." So Magan Bhai used to go to the village lake and bring the mud or the soil from there, and from that soil he used to prepare pots, bowls, and different types of articles from that. So one day he prepared a small pot. He painted it colorfully. He decorated that pot very colorfully, beautifully, and then he kept that pot for sale. So one day another man, Ramesh Bhai, was passing by nearby his shop. He saw the pot and it was so beautiful that he liked it, and he purchased the pot and brought it back home. Now his daughter Bindya saw this pot and she was very happy to see this beautifully colorfully painted pot. She said that, "Papa, I'll fill water in this small pot." "Okay," said Ramesh Bhai. Now every day Bindya fills water using this small pot. One day the pot slipped from her hand. It fell down and broke into pieces. Heartbroken, Bindya collected the pieces and kept them in behind the house. Now every day Bindya used to fill water in this small pot. But one day what happened? While she was filling the water in the pot slipped from her hands. It fell down and broke into pieces. Now dear children, you all know that the things or the articles which are made out of mud, जो मिट्टी के बर्तन होते हैं वो गिरते हैं वैसे ही तुरंत टूट जाते हैं, या कांच के होते हैं वो भी तुरंत टूट जाते हैं. तो वैसे ही जो ये पॉट था वो गिर गया उसके हाथ में से और इट ब्रोक इनटू पीसेस. शी वाज वेरी हार्ट ब्रोकन. दैट मीन्स शी फेल्ट वेरी बैड दैट द पॉट, सच अ ब्यूटिफुल लवली पॉट that she liked so much, had slipped from her hand and it got broke. Now she collected all the broken pieces and then kept behind the house.
Grandfather asked, now tell me dear, what would happen to these pieces? फिर ग्रैंडफादर ने उससे पूछा कि ये सारे पीसेस जो हैं इकट्ठे किए हैं, अब उनका क्या होगा? Some girls like me must have used this for playing the games, replied Zil. You are correct. These pieces are mixed again with the soil. Hearing this, confused Zil asked what other things get mixed in the soil. So the grandfather asked, now tell me what will you do with these pieces, or what would happen to the pieces? Then Zil replied very calmly and very casually that the girls like me use these pieces for playing the games. And so grandfather said, yes, you are correct, but these pieces again get mixed in the soil. जो चीज़ मिट्टी की बनी होती है टूट जाती है, वापस ही वो मिट्टी में मिलकर मिट्टी बन जाती है. तो ये सुनकर जिल तो थी बहुत कंफ्यूज थी और उसने उसने ग्रैंडफादर से पूछा और मिट्टी में क्या क्या चीज़ें मिली हुई होती हैं. Number 72 is the activity 1. What do we need? Now in this activity you can see that the soil is being sieved. Sieved means soil को छाना जा रहा है with the help of a sieving a sieve. Now this is called as the sieve. इसको हम क्या बोलते हैं? इसको sieve बोलते हैं. और इसके हेल्प से जो है soil को हम छान सकते हैं. ये एकदम छोटी एकदम बारीक इसमें वो sieve है जिसमें से only fine particles of soil can go through it or pass through it. Now what is the first activities? What do we need? Spade, sieve for sieving, wheat, sieve for sieving wheat flour, and thin cotton cloth lumps of soil. These are the things that we need for sieving. सबसे पहले एक स्पेड फावड़ा चाहिए, फिर एक छन्नी चाहिए ऐसे छानने के लिए, गेहूं छानने वाली छन्नी चाहिए, सीव फॉर सीविंग व्हीट फ्लावर, और दूसरी कैसी चाहिए? व्हीट फ्लावर गेहूं का आटा छानने वाली छन्नी. एक सीव ऐसा चाहिए, ये जो है ये जो sieve that I have shown you, this is for sieving the wheat flour. For sieving the wheat you have a little bit of the net of this is little bit of bigger size from which you can sieve the wheat. Then you need a thin cotton cloth like this. I have shown this is the muslin cloth, fine cotton cloth that is needed, and then lumps of soil. That means you need some soil. Now what to do? Now take one lump of soil, turn it into small particles size, sieve it through the wheat sieving sieve. What is left in the sieve, observe it and note. Keep the component left in the sieve separately. Now first what you have to do, you have to take a lump of soil, मतलब एक मिट्टी का ढेर लेना है और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेना है. उसके बाद उसको ऐसी बड़ी जो गेहूं छानने की जो छलनी होती है उसके अंदर से सीव को छानना है. देन यू सी व्हाट हैपेंस. What comes out of the sieve, what drains out of the sieve or passes through the sieve, and what is left inside the sieve. बहुत सारी चीज़ें ऐसी होगी जो जो एकदम बारीक मिट्टी होगी या जो उसमें से निकल जाएगी, जो थोड़ी मोटी होगी वो भी उसमें से निकल जाएगी, लेकिन बड़े बड़े जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं या बड़े से सैंड पार्टिकल्स होते हैं वो इसके अंदर से नहीं पास होंगे. So what you have to do is the things that are left in this sieve, you have to keep it separately. Now what is left in the sieve? A small स्टोन्स इज लेफ्ट इन द सीव. तो छलनी के अंदर क्या रह गया? छोटे छोटे जो मिट्टी के ढेले थे या छोटे छोटे पत्थर थे वो इसके अंदर रह गए. और व्हाट इज सीव्ड आउट, मतलब कि ये सीव्ड आउट मतलब इसमें से क्या निकल गया, छलनी में से क्या छन के आया? अदर कॉम्पोनेंट्स ऑफ सॉइल इज सीव्ड आउट ऑफ द सीव. और जो और सॉइल के जो बाकी सारे कॉम्पोनेंट्स थे पत्थर के, छोटे छोटे पत्थर के अलावा वो सारे उस छलनी में से बाहर निकल आए. अब नाउ सेकेंड एक्टिविटी में क्या करना है? दिस इज द सेकेंड एक्टिविटी. कलेक्ट द sieved part and sieve it with the sieve used for sieving the flour. अब हमको क्या करना है? We have to collect this soil that we have sieved in the first activity, the one which has passed to the wheat sieve. You have to collect that soil and that you have to sieve again into from the sieve which is used for flour. मतलब जो पहले हमने फर्स्ट एक्टिविटी में क्या किया, गेहूं छानने की छलनी में से हमने मिट्टी को छाना, जो वो मिट्टी उसमें से जो छन के आई, अब उस मिट्टी को कलेक्ट करके हमको किस में से छानना है? छोटे छोटे होल्स वाली छलनी, मतलब कि गेहूं का आटा छानने वाली छलनी में से हम उसको अब छानेंगे. और फिर हम देखेंगे कि व्हाट इज़ लेफ्ट इन द सीव. उसके बाद हम देखेंगे कि अब जो बारीक छलनी में से जब हमने मिट्टी को छाना तो छलनी में क्या रह गया और छलनी में से जो कितनी कैसी मिट्टी जो है छन के बाहर आई है. कीप द कॉम्पोनेंट्स लेफ्ट इन द सीव सेपरेटली. अब जो इसमें भी छानने के बाद जो कॉम्पोनेंट्स जो सीव में रह जाते हैं, छलनी में रह जाते हैं, उसको आप एक साइड में कर दीजिए. नाउ व्हाट इज लेफ्ट? वी हैव टू राइट द ऑब्जर्वेशन. सैंड इज लेफ्ट इन द
sand is left in the sieve, not the cloth, it is the sieve, that is sand is left. फिर fine powder of the soil is filtered out of the sieve. मतलब कि जो छोटे छोटे जो एकदम बारीक मिट्टी थी वो इसमें से छन के जो है बाहर आ गई एकदम बारीक, क्योंकि इसके जो होल्स थे इस छलनी के, गेहूं का आटा कैसा होता है एकदम बारीक होता है, तो उसके लिए बहुत ही छोटे छोटे होल्स वाली सीव चाहिए। तो उसमें से अगर हम जब मिट्टी को छानेंगे तो खाली एकदम जो फाइन पाउडर होगा वही छन के आएगा, और जो मोटे मोटे जो रेती के पार्टिकल्स होंगे या सैंड पार्टिकल्स होंगे वो इसी सीव के अंदर रह जाएंगे। नाउ थर्ड एक्टिविटी में क्या करना है, अब जो ये फाइन पार्टिकल्स वाला जो है मिट्टी है या सॉइल है, इसको कलेक्ट करेंगे और इसको हम एक मसलिन क्लॉथ में से या फाइन कॉटन क्लॉथ में से हम इसको फिल्टर करेंगे या छानेंगे। दिस इज द थर्ड एक्टिविटी। कलेक्ट द सेकेंड टाइम फिल्टर्ड सॉइल एंड सीव इट थ्रू अप इन अ कॉटन पीस। अब जो है तीसरी बार में हमको फर्स्ट टाइम में बड़े छेद वाली जो छलनी यूज़ करनी थी, सेकेंड टाइम में इस टाइप की छलनी से हमको मिट्टी छाननी थी, और जो थर्ड एक्टिविटी है उसमें इस टाइप का जो कॉटन क्लॉथ होता है वो एकदम पतला और बारीक होता है। ये देखिए कि एकदम कितना पतला और बारीक है। अब इसके अंदर से जो छनी हुई एकदम बारीक मिट्टी है उसको इसमें से छानना है। Now collect the second time filtered soil and sieve it through the cotton piece. What is left on the cotton cloth? Also observe the filtered components and note. Separate the component left in the क्लॉथ फ्रॉम दोज फिल्टर्ड फ्रॉम द क्लॉथ। अब हमको क्या करना है, जो सेकेंड टाइम सीव करी सॉइल इसमें लेके फिल्टर करना है। अब फिल्टर करने के बाद देखिए वापस के इसमें से जो कॉटन क्लॉथ है एकदम फाइन कॉटन क्लॉथ है, उसमें से क्या जो है पास आउट होता है, क्या फिल्टर होता है, और क्या क्लॉथ के अंदर ही रह जाता है जो कि फिल्टर नहीं होता है। उन कंपोनेंट्स को हम अलग रखेंगे। सो स्टिल्ट इज लेफ्ट इन द क्लॉथ। Silt is left in the cloth and fine powder of the soil is filtered out of the cloth. अब इसके अंदर क्या रह जाता है, सिल्ट रह जाता है, वो भी एक टाइप ऑफ कंपोनेंट है सॉइल के अंदर का, तो वो रह जाता है। और बाकी एकदम बारीक जो सॉइल होता है एकदम फाइन, मतलब फाइनेस्ट पाउडर फॉर्म ऑफ द सॉइल इज फिल्टर्ड आउट ऑफ दिस मसलिन क्लॉथ। तो ये 3 ऑब्जर्व एक्टिविटीज से जो है, राइट नाउ मेरे पास ऐसा सॉइल नहीं है कि मैं आपको करके दिखा सकूँ, तो सूखी मिट्टी होती तो मैं आपको डेफिनेटली आई वुड हैव शोन यू कि ये फिल्टर कैसे कर सकते हैं। Now observations: observe the filtered and the leftover components for first, second and third time. Now you can see what is left. सबसे पहले में क्या था कि small stones निकले, फिर sand particles निकले और फिर silt निकला। तो ये तो वो components थे जो कि filter नहीं हुए हैं, और बाकी सारे components जो soil के अंदर थे वो सब filter होके वो जो है ultimately from the fine muslin cloth also that has been filtered, and we have got the fine powder of the soil that is filtered from this cloth. With page number 73, observation: observe the filter and leftover components for the first, second and third time. Now what you have to do is you have to observe all the filtered components, that means the soil that we got after filtering in activity 1, 2 and 3, and all the components that got collected in the sieve in the first, second component and in the fine cotton cloth in the third activity. Now think and say which components are obtained after sieving the soil with different sieve size. Can there be any other components present in the soil? How does the amount of different components affect the type of the soil? Now see, there are different components that we obtain from the sieve of the different size. Like in the bigger sieve of the wheat, from which we sieve the wheat, we got the small stones. In the second one we got the sand particles. In second one the stilt, which is again a mixture of the minerals from which the stilt is made. Stilt is a mixture of some of the minerals that are present in the soil. So it is in the third one, that stilt was left on the fine cloth. So that is what we obtained, and the ones which passed out of the sieve was a very fine soil. And in the first one we got a little coarse soil, in the second one again we got the fine one, and in the third from the cloth we got the finest kind of the soil. Now how does the amount of different components affect the soil? Now the different components were, as we sieve, in the first activity lot of sand was there, in the second activity the sand was less, and the third activity it was the purest form of the fine soil. So all these components which got removed from it changed the type of the soil.
soil. So basically the soil are of three types on the basis of the components that they have and on the basis of the colors that they have. Now we move on to page number 74. Now there's another activity which is your activity 4. What does this activity say? What do we need? A transparent plastic bag, transparent glass, spade, lump of soil and some thread. Now first activity, in activity 4, you can see this is the diagram or the picture of an activity 4 in which a lump of soil, मतलब एक मिट्टी का ढेला जो है उसको हमने एक प्लास्टिक बैग के अंदर बंद करके और उसको अच्छे से धागे से बांध कर रखा हुआ है. Now what you have to do is that you have to take this lump of soil, you need to a wet lump of soil. उसके लिए एकदम सूखा मिट्टी नहीं चाहिए, क्योंकि सूखी मिट्टी होगी तो वो पाउडर फॉर्म में हो जाएगी. हमको लंप चाहिए, दैट मीन्स इट शुड बी लिटिल बिट वेट. तो हमको कैसी मिट्टी लेनी होगी, दैट वी हैव टू सी. What will you do? Bring 3 or 4 lumps of soil from the nearby farm from 1 feet depth by digging with the spade. आपको dig करके लगभग 1 feet नीचे से, not the top layer of the soil but the soil which is 1 or 2 feet deep inside, that lump of soil you have to take. And then keep one of the lumps in the soil in the transparent plastic bag and then tie its mouth with the thread. Now keep this plastic bag in a sunlight for some time. Now after taking one of the lumps which we have taken out, that soil we have taken out deep from the earth, that is 1 or 2 feet down after digging, and that lump of soil we have to take and keep it in the plastic bag and tie that plastic bag with a thread tightly and keep this plastic bag in sunlight for some time. After some time, bring it into the class and observe. Now what you have to do is, after keeping this plastic bag in the proper sunlight, you have to take it back into and just observe what happens in this plastic bag. Are there any changes inside the plastic bag? You can see the change in the soil. What happens after keeping it for some time? That means sometimes meat उतने समय के लिए रखना होगा कि जो soil है that वो थोड़ी सी जो है मतलब सूखने लगे या feel that it has become hot now. जो गर्मी है सूरज की वो soil को भी soil तक पहुंची है, उतने टाइम के लिए हमको उसको sunlight के अंदर रखना होगा. Now what do you observe? What we observe is that the inner part of this plastic bag, ये plastic bag के जो अंदर का part है उसके अंदर हमको छोटे छोटे से जो है droplets पानी के दिखाई देंगे. छोटी छोटी पानी की बूंदें जो है इस plastic bag के ऊपर, जो soil के ऊपर का part का जो plastic bag है वहां पर हमको छोटे छोटे drops of जो है water we can see. Now why we can see that? The inner wall of the plastic bag, we observe that on the inner wall of transparent plastic bag, tiny droplets are visible. Here, why it is visible? Because the moisture that was there or the water that was present in the soil, because we have taken the soil from inside the, after digging it 1 or 2 feet, that means that soil has a little bit of water in it, or we can say water is not exactly in the मतलब पानी एकदम पानी के जैसे उसके अंदर नहीं होगा, पर वो मॉइस्चर के फॉर्म में जो हल्का सा जो गीलापन जो होता है मिट्टी के अंदर वो है, वो पानी की वजह से होगा. और उस गीलेपन के वजह से जो है या जो उस मॉइस्चर के वजह से जो धूप में अगर वो रहेगा प्लास्टिक बैग और वो सॉइल रहेगा तो जो पानी या मॉइस्चर है तो स्लोली स्टार्ट्स इवेपोरेटिंग इन द सनलाइट, या सूरज की गर्मी से जो है वो पानी धीमे धीमे स्टार्ट्स इवेपोरेटिंग फ्रॉम द सॉइल. एंड दोस ड्रॉपलेट्स, व्हेन इट स्टार्ट्स इवेपोरेटिंग, दोस ड्रॉपलेट्स कंडेंस इन द प्लास्टिक बैग एंड टेक द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स इनसाइड द plastic bag. So that is the evaporation of the moisture from the soil. That is why we can see those tiny droplets inside the plastic bag. So this was your experiment 4. Now we'll take experiment 5. Here also we have to take a transparent glass. Either you can take a plastic glass, but transparent glass लीजिए so that these things are clearly visible that what happens. Activity 5, take a transparent glass, fill it with water. Now add a lump of soil in the glass, observe what happens. Now where to observe? In the transparent vessel or near the soil lump. Now what we have to do is that we have to take a lump of soil and we have to put it in a plastic glass, and now we have to observe what happens in the plastic glass. We have to add a lump of soil
एंड दिस वी हैव टू फिल दिस ट्रांसपेरेंट ग्लास को हमको पहले किससे फिल करना है, दिस ग्लास वी हैव टू फिल इट विद द वाटर एंड आफ्टर फिलिंग इट विद वाटर वी हैव टू ऐड दिस लंप ऑफ सॉइल, मतलब सॉइल का जो ढेला है, मिट्टी का ढेला है, वो इस पानी के भरे हुए ग्लास के अंदर हमको ऐड करना है. As soon as you start, a lump goes down. Now this lump will go inside the water because this will be heavy, so it's not going to float on the top of the water. ये भारी है इसलिए वो पानी में नीचे ग्लास में नीचे जो बॉटम ऑफ द ग्लास है वहाँ चला जाएगा, वो पानी के ऊपर तैरेगा नहीं, बिकॉज इट इज़ हैवी सो इट सिंक्स. इफ इट इज़ लाइट इट विल फ्लोट. सो ये पानी में सिंक करेगा और एज इट स्टार्ट सिंकिंग यू कैन सी द बबल्स कमिंग आउट ऑफ दिस lump of soil. This is the air. Why the bubbles come out? This is the air that is between the particles of the soil. Now bubbles are seen near the soil lumps and water above the soil lumps. The पानी तो है, ये सॉइल के ऊपर पानी तो पूरा ही रहेगा, लेकिन जो एयर जो बबल्स हमको दिखाई देंगे इसमें से, वो एयर दैट इज बीइंग रिलीज्ड एंड वाटर इज टेकिंग द प्लेस इनसाइड दैट लंप. पानी के अंदर से जितने भी एयर होगा, वी ऑल नो दैट द सॉइल कंटेन्स एयर ऑल्सो. जैसे पानी होता है इन द फॉर्म ऑफ मॉइस्चर, जो सॉइल का जो सॉफ्टनेस होता है, द सॉइल इज सॉफ्ट जस्ट बिकॉज ऑफ द एयर इज प्रेजेंट बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द सॉइल. इफ द सॉइल इज वेरी वेरी हार्ड, दैट मीन्स वेरी लेस एयर इज प्रेजेंट and the particles are very close to each other of the soil. So as the bubble arises, that means that air is being released and the water is taking place inside of that air inside the soil, and that is why those bubbles can be seen as you put this lump of soil in the water. The air in the soil is being replaced by the water which is in the glass. So now we can two things we can observe from this, that it contains air also, the soil contains air also, as well as it contains water also. So now next is your remember and write what different things are obtained from digging the soil. After digging the soil, we obtain silt, soil, sand, dust, organic matter like rotten leaves and dung, minerals, metals, and earthworms, and many small microorganisms.